All right, so welcome everyone for this session. This is the second day of the daily drill that we have planned. So yesterday we did a daily drill on the reading comprehension area. So we are doing it area wise. So we did for the reading comprehension area, so to say. Today we'll be looking at arithmetic. So before we start and before people join us, there are a few things that I'll talk about at the very beginning. All right. So the first thing is, of course, I hope all of you have taken the test that was floated today. The link to that particular test or the course is there in the description box below. So what you can do is you can just have a look at it once in case you haven't taken the test. Even if you haven't taken the test, it's okay. What you can do is you can just attend the session and you can solve along instead of maybe waiting for the test and so on and so forth, right? So that is what you can do. One second thing, if you have signed up for the course, if you have registered for the course, there will be a prompt that will ask you, or there will be a mail that you would have got which will ask you to sort of confirm your enrollment, and that is basically what you have to do. Once you do that, only then will you be able to attempt the tests. If you are not doing that, then you will not be able to take the tests. So make sure that you have clicked on that particular link that you would have got on the email, and then you will be able to access all the tests that are there, all the questions that are there. All right, so today is the session on arithmetic, and we'll start with the session right away. So there were 10 questions that were there, and all of them were based on arithmetic. So they were more or less manageable questions, I would say, purely because these questions were the ones that you would have done in your school days as well, something similar to what we had asked today. So ये सारे questions तो I'm sure अपने school में भी किए होंगे. And that's why I am assuming that a lot of you would be very comfortable with the kind of questions that were asked and the kind of timing that was given to you, right? So you had 20 minutes to solve this test, and for 20 minutes ke andar you had to solve this entire thing. That 10 questions that were there, it was slightly challenging, but I think it was manageable, right? So we will look at the solutions. We'll try to see if there are any tricks, traps that were involved in these questions. And uske baad let's discuss, and then let's see if some of you got a few things right or wrong, or something that you could have done better. तो वो एक बार discuss कर लेंगे, and I think then you should be fine. Yeah, good evening. Hi, Kushi. Right, so let's get going with the first question. We'll start directly. There is no theory as such because arithmetic is a very vast area, so to say. तो हर एक question के अंदर जो भी theory आएगी, that we will cover, and then we will solve that particular question. ठीक है? So let's get going. So we look at the first question now. So the first question that we have here is in terms of Arun's present age in years is 40% of Barun's present age in years, so to say. In another few years, Arun's age will be half of Barun's. Okay, so Arun ka age will be half of Barun's. By what percentage will Barun's age increase during this period? Yeah, hi Gaurav. So let's look at this particular question. It's a fairly interesting question, not just because there are ratios involved and all, but because there is one small shortcut that if you know, you will be able to solve ratios questions very quickly. So first I'll try to explain to you the question using the traditional method. So let's say Arun's present age in years is 40% of Barun's age in years, right? So one way of doing it is you assume Arun's age as A and Barun's age as B. So let's say, for example, the present age, right? So the present age, so present ages are, let's say, A and B. Now, what do we know because of this? We know that Arun's present age in years is 40% of Barun's. So A we know is 40% of B. So 40 by 100 times B. This is what we have here, right? In another few years, Arun's age will be half of Barun's. So when we add X years to Arun's age, Barun would have also grown by X years. So A plus X in that case will be half of B plus X. Now we have to figure out by what percentage will Barun's age increase during this period. That means we have to find out what is the value of X by B, right? And this is basically where you might find it a bit difficult. It's not very difficult if you are able to just manipulate the terms and do it, but otherwise it might come across as a bit challenging. So let's see what we'll do here. So A is 40 by 100 into B. So we will just cancel out 20 from the numerator and the denominator. तो यहाँ पे बन जाएगा 2/5 टाइम्स बी बन जाएगा. ठीक है, 20 2s are 40 and 20 into 5 20 into 5 100 मिल जाएगा. सो ए इक्वल टू 2/5 बी, ये मुझे पता है.
सो व्हाट आई डू इज आई सब्स्टिट्यूट, अभी मुझे x और b के फॉर्म में चाहिए ना, तो आई डोंट नीड a एट ऑल। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ a वी विल पुट 2b/5। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिखेंगे 2b/5 प्लस x इक्वल्स b/2 प्लस x/2, ये मिल जाएगा। अभी यहाँ पे अगर हम टर्म्स को थोड़ा सा शफल कर लें, यू आर गोइंग टू गेट 2b/5 माइनस b/2 इक्वल्स x/2 माइनस x, राइट? सो उल्टा हो जाएगा बेसिकली x/2 and this will also be negative. So let's see what happens in this particular case. So you are going to get in fact इसको उल्टा कर देते हैं, b/2 minus 2b/5 will be equal to x minus x/2, ठीक है? तो यहाँ पे you will get 5b minus 4b, that is b in the numerator, and 5 2s are 10 will be equal to x minus x/2. So you'll get x/2 itself, and that's why you are going to get x by b is equal to 2/10 or 20%. ठीक है? So this is what we can do. Now another thing that we could have done is instead of taking a and b, हम लोग बोलते हैं कि b के जगह पे ना b के जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं, या फिर a के जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अरुण का प्रेजेंट एज इज 4x। अगर अरुण का प्रेजेंट एज 4x है तो वरुण का प्रेजेंट एज बन जाता है 10x, ठीक है? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अरुण का प्रेजेंट एज इज 4x, वरुण का प्रेजेंट एज बिकम्स 10x, एंड देन यू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। 10x प्लस y, 4x प्लस y बनेगा, 4x plus y will be half of 10x plus y and so on। तो ये exactly जो भी यहाँ पे हमने चीज की है वही चीज हम यहाँ पे भी कर पाएंगे, ठीक है? So that is one way of doing it, right? I hope all of you know this method and you are comfortable doing this, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा मेथड है that we can generally use to solve these kind of questions। But इसके अंदर you will see that there are a lot of fractions involved। कहीं पे even I made a mistake here when I took 2/5 2b/5 minus b/2। तो ये थोड़ा सा it will play on your mind, and if you do this then you will get a negative answer, then you will again start thinking, फिर से you will go back to the question। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास हो सकता है, right? Now what we can do in this particular context is इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? एंड इसके अंदर I'll just put it in the form of ratios। I'll clear all the ink on this slide so so that we have a fresh slide to write on। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अरुण है, यहाँ पे वरुण है, ठीक है? सो फर्स्ट थिंग इज अरुण's प्रेजेंट एज इज 40% ऑफ वरुण's। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वरुण का एज 10 इयर्स होता लेट्स से, देन अरुण का एज बन जाता 4 इयर्स फॉर एग्जांपल, राइट? और यू कैन से दैट देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:5, ठीक है? सो 2:5 के रेशियो में उनके एजेस हैं। विल राइट दिस एज 2/5 यहाँ पे। सो अगर मैं a by b लिखता हूं तो आई गेट द रेशियो एज 2/5, ठीक है? अभी कुछ इयर्स के बाद इन अनदर फ्यू इयर्स व्हाट विल हैपन इज अरुण's एज विल बी हाफ ऑफ वरुण's। इसका मतलब क्या हो गया, अरुण का एज अगर 1 है तो वरुण का एज 2 हो जाएगा, बिकॉज 1 इज द हाफ ऑफ 2, ये हो जाएगा। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, जितना भी एज ज्यादा हो या कितने भी साल निकल जाए, देयर विल बी वन थिंग दैट विल बी कांस्टेंट, एंड दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, ठीक है? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू एंड योर सिबलिंग आर देयर, ठीक है? एंड यू आर एल्डर टू योर सिबलिंग बाय 3 इयर्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल टुडे लेट्स से यू आर 20 इयर्स ओल्ड एंड योर सिबलिंग इज 17 इयर्स ओल्ड। कल को when you become 25 years old, your sibling will be 22 years old, right? So although the number of years has changed, हम आगे चले गए हैं, but the gap will remain the same ना। तो यहाँ पे भी exactly वही चीज है। In the first fraction, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? The gap between the numerator and the denominator is 3। अगर मैं इसका गैप भी सेम कर दूं, तो कैन आई से दैट दिस विल बेसिकली बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस व्हेन इट बिकम्स दिस। तो 1/2 में मेरे को गैप 3 का चाहिए, तो कैसे 3 का गैप लेके आएंगे? आई विल राइट दिस एज 3/6। नाउ व्हाट आर वी सेइंग, 2/5 जो था वो अब 3/6 बन रहा है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, 2 हैज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड 5 हैज इंक्रीज्ड बाय 1। सो वरुण का एज 5 से 6 हो गया है, which means that the age has increased by 1/5 or 20%। Now this is basically a faster way of doing it, and अगर ये if you are able to visualize this, then you will be able to solve this within seconds without even writing down anything, ठीक है? So 2/5 1/2, gap is 3 in the first case, तो second case में भी gap 3 चाहिए, so 2/5 becomes 3/6। So 2 will increase by 1 and become 3, 5 will increase by 1 and become 6, and that is basically how you can solve this particular thing। income expenditure के questions में भी ये सारी चीजें काम आती है, right? So if the income increases by a certain amount or the expenditure increases by a certain amount for two people, तो उनका सेविंग कितने से रिड्यूस होना चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए, all those things you will be able to figure out very easily if you maintain the gap constant। अब यहाँ पे because both of them were growing by the same number of years, हमने gap को constant रखा,
ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन एंड एवरीबडी फिगर्ड आउट हाउ वी डिड दिस. ठीक है, सो इफ देयर आर नो डाउट्स वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, so instead of going for the equations, it becomes a lot more efficient for you if you are able to do it like this. Okay. All right. Perfect. Okay. Sure. So we'll move on to the next question now. So the first question, the answer was 20%. In fact, many of you got it right, but I am assuming that a lot of you use the equations. That's why you might have taken longer than usual to complete this. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज अगेन टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क इज अ पार्ट ऑफ अरिथमेटिक. सो लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन नाउ. इट्स अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. टाइम एंड वर्क का जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसी टाइप का है. So one person can complete a job in 120 days. This person works alone on day one. Day two को क्या होता है? He is joined by another person who can also complete the job in exactly 120 days. मतलब same efficiency का एक और person आके उसको join कर लेता है. On day three they are joined by another person of equal efficiency. तो day three को भी कोई तो ऐसा join करता है जो 120 days में उसको कर पा रहा था. And like this, every day a new person with the same efficiency joins the work. Now you have to figure out how many days are required to complete the job. It's extremely straightforward यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे number of days पूछे गए हैं. And if one person can complete a job in 120 days. Now you can see that the job is remaining constant throughout the entire journey. ऐसा नहीं है कि वो job change हो रहा है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि one person can do something in 120 days, another person can do something else in 120 days. ऐसा नहीं है. We are talking about the same job. तो हम इस job को units में लिख सकते हैं. So let's say for example the entire job comprises of 120 units. क्यों 120 units लिया मैंने? क्योंकि 120 days these people are working ना. So 120 days if they are working and I want to figure out what is the entire work that they are doing, I can say that every day they are doing 1 unit of work. So let's say for example ये लोग bricks lay कर रहे हैं. So one person can lay one brick in a day. बहुत ज्यादा inefficient है, but one person can put one brick and come back. ठीक है, वो चल रहा है. And total काम कितना करना है? उनको 120 bricks लगाने हैं. So if one person can put one brick in one day, 120 bricks लगाने के लिए उसको 120 days लगे. Fairly straightforward. ठीक है, तो 120 units का काम है. Let's say for example, तो one person in one day, right, will do 1 unit per day. ये स्पीड होगा for each individual who will be working here. राइट नाउ फर्स्ट डे पे ही इज वर्किंग ऑल अलोन. तो डे वन पे एग्जैक्टली 1 unit ऑफ वर्क हैज बीन डन. डे टू पे क्या होगा? डे टू पे एग्जैक्टली 2 units ऑफ वर्क वुड हैव बीन डन, क्योंकि द पर्सन इज वर्किंग ऑन द सेकेंड डे एंड ही इज जॉइंड अनदर पर्सन हु इज वर्किंग विद द सेम एफिशिएंसी. तो 1 unit बाय द फर्स्ट पर्सन, 1 unit बाय द सेकंड पर्सन, टोटल 2 units हो गए. सिमिलरली डे थ्री 3 units विल बी डन. डे फोर 4 units विल बी डन एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा. Now we have to finish 120 units. So we can say that 1 plus 2 plus 3 and so on till the time we reach n should give me 120. Now those of you who know your numbers very well will know that some of the first n natural numbers 1 plus 2 plus 3 till n अगर करते जाएंगे, it is given by a simple formula n into n plus 1 by 2 and this should be equal to 120. ठीक है, सो ये वाले एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू डोंट नो दिस फॉर्मूला एट ऑल एंड यू आर लाइक एक्सट्रीमली बैड एट मैथ्स. लेट्स से, ठीक है, आई होप नॉट, बट इफ यू आर, लेट्स से, तो क्या करेंगे? यू कैन मैन्युअली ऐड 1 plus 2 plus 3 क्योंकि 120 तक ही पहुंचना है. ठीक है, वर्स्ट केस यू कैन यूज अ कैलकुलेटर एंड गेट योर आंसर. तो ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जो एवरीबॉडी विल बी एबल टू सॉल्व दिस. अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के आराम से सॉल्व करे ना, तो ईच एंड एवरी पर्सन हु इज अटेम्प्टिंग द कैट विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, which basically means that you have to solve this question and you have to solve it faster than those people. ठीक है, तो यहाँ पे n into n plus 1 by 2 is the formula. So you are going to get इसका condensed version is n into n plus 1 will be 240. So n square plus n is 240. Now one way of doing this is इसको split करेंगे algebra के form में. We will split 240 into two parts such that their difference is 1. वैसे करके भी कर सकते हैं. The other way of thinking about it is I am adding a square of a number to the number itself. अब स्क्वायर्स जनरली बहुत बड़े होते हैं कंपेयर टू द नंबर्स, राइट? सो 9 स्क्वायर, 9 तो छोटा सा नंबर है बट 81 इज अ लार्जर नंबर. ठीक है, सिमिलरली 11 स्क्वायर, 11 बहुत छोटा नंबर है बट 121 इज अ मच लार्जर नंबर. सो द स्क्वायर हैज टू बी क्लोजर टू 240. तो 240 के आसपास के कौन से स्क्वायर्स मुझे पता है, दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन. ठीक है, सो 240 के आसपास के स्क्वायर्स अगर देखे जाए, 13 स्क्वायर इज 169, इट इज स्लाइटली फार अवे फ्रॉम 240. 14 स्क्वायर इज 196, थोड़ा पास में आ गए बट स्टिल फार अवे फ्रॉम 240. 15 square is 225, very close to 240. 16 square तो 240 के आगे चला जाता है. So we can try for 15 square plus 15. 15 square is 225 plus 15 will give us 240.
ठीक है। सो यहाँ पे 240 मिल जाएगा अगर n को हम 15 लेते हैं। सो हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर देम टू फिनिश द जॉब? 15 डेज, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हियर इज 50। सो मैन्युअली भी कर सकते हैं, यू कैन यूज द फॉर्मूला एज वेल, एंड द यूनिटरी मेथड विल वर्क बेटर हियर बिकॉज 1 बाय 120 करेंगे, फिर 2 बाय 120 करेंगे, फिर 3 बाय 120 करेंगे, इट विल लीड टू अ फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शंस आर जनरली नॉट समथिंग दैट पीपल आर कंफर्टेबल विथ। दैट इज व्हाई आई वुड रिकमेंड यू टू डू इट यूजिंग द यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यूनिट मेथड से यू कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Fine, I hope everybody has got this and there are no doubts in this one. So we will move on to the next question. All right, yeah. So next question is fairly straightforward in terms of reading the question, but आगे जाकर there is a very small trap in this question which some of you might have fallen into. So again, I'm not sure how many of you fell into that particular trap, but during the test, even I thought for a moment that there was something in addition to what was given. Right? So यहाँ पे क्या question है? An elevator has a weight limit of 630 kg and it is carrying a group of people of whom the heaviest weighs 57 kg. तो सबसे heavy जो इंसान है ना उसका 57 kg weight है and the lightest weighs 53 kg. तो बाकी सारे इसके बीच में है. तो या तो everybody is 57 and one person is 53, या तो everybody is 53 and one person is 57, ऐसे कुछ चल रहा है, एंड या तो मतलब 1 is 57 1 is 53 सब बीच में आते हैं, बट 57.1 kg का कोई नहीं है एंड 52.9 kg का भी कोई नहीं, राइट? सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो एलिवेटर का वेट लिमिट है 630 kg। नाउ हेवीएस्ट इज 57, लाइटेस्ट इज 53। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन दिस ग्रुप? अगर मेरे को लोगों को मैक्सिमाइज करना है, इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीपल, आई हैव टू एंश्योर दैट ईच इंडिविजुअल इज एज लाइट एज इज पॉसिबल, राइट? तो अगर मुझे बहुत ज्यादा लोग चाहिए इस लिफ्ट के अंदर, तो मुझे बहुत सारे कम वेट के लोगों को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 57 केजी के लोगों को भरता जाऊं तो आई विल बी एबल टू रीच 57 570 कर लूंगा, एंड देन अगेन यू विल बी एबल टू ऐड वन मोर एंड दैट विल बेसिकली बी द एंड ऑफ इट। बट देयर इज समवन हु इज 53 केजी का एज वेल। तो इसको मैक्सिमाइज करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 57 केजी का देयर शुड बी वन पर्सन हु इज देयर, एंड 53 केजी के देयर शुड बी लेट्स से एक्स पीपल हु आर देयर। So 57 plus 53 जो है ना, it should be less than or equal to 630, and this is extremely important. ये less than or equal to जो है ना, a lot of people might think that weight limit 630 kg है ना, this has to be equal to 630, and फिर वो equal to करने के चक्कर में ना, you will end up getting some answer which will not be consistent with anything, and that is basically where people can make mistakes. But यहाँ पे क्या करना है, मुझे less than or equal to 630 ensure करना है. So what will I ensure? 53x जो है ना, that is less than or equal to 630 minus 57, मतलब 600 minus 27, मतलब 573. ठीक है, so 53x should be less than or equal to 573. So x should be less than or equal to, अभी यहाँ पे मुझे इंटीजर चाहिए because number of people can't be 10.2, ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, so 573 by 53 is what I will need to do. Now 53 into 10 gives me 530, और 530 के आगे अगर 573 पे जाना है तो मैं सिर्फ 43 ऐड कर रहा हूं, तो आई विल बी एबल टू से दैट दिस इज गोइंग टू बी 10 पॉइंट समथिंग. ठीक है, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग. तो व्हाट इज द इंटीजर वैल्यू दैट x कैन टेक? x मैक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू 10. 11 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 11 करेंगे तो वो 573 के ऊपर चला जाएगा, 583 हो जाएगा, राइट? सो x मैक्सिमम इज 10. So what is the maximum number of people in this group? One person who is 57 kg and 10 people who are 53 kgs each. तो इससे अपना बन जाएगा. ठीक है, there are other ways of looking at it as well. You could have said 57 into 10 people 570, उसमें 53 ऐड कर दो 623 तो भी बन जाता. But if you want to look at efficiency, the most efficient solution could be जहाँ पे 53 के 10 लोग हैं and 57 का कोई तो एक इंसान. So that could also be a way of doing it. So there are multiple ways possible, but the maximum number of people cannot go beyond 11. 11 के आगे नहीं जा सकते. ठीक है, so the correct answer here is 11. Some of you might have marked 10 as well, क्योंकि वो 10 जैसे मिल जाता है x max. You feel very tempted to mark 10. Some of you might have tried to equate it to 630. तो जो भी extra बचा यहाँ पे, that you would have tried to give to someone and added the 12th member as well. ऐसे भी कुछ किया जा सकता है. And during the test, of course, under the pressure of a timer, we tend to behave a bit funnily. ठीक है, so that is something that you have to be careful about, and I hope you understood this particular solution. ठीक है, so any doubts, anything, let me know. But this was again a straightforward question to understand, but बहुत दो तीन छोटे मोटे traps हैं.
6:30 is the maximum weight that you can reach. One. Second thing, 10 point something will mean 10, not 11. And again, if you forget to add that 10 plus 1, वहां पे एक mistake हो सकता है. So two or three basic traps that were there in this particular question, which people might have fallen. ठीक है? चलो, all right. All right. So let's move on to the next one. Again, we are going to time, speed, and distance here, right? So time, speed, and distance is another concept that is fairly important, and this is a very easy question if you look at it. But again, there is a faster way of thinking about it. तो काफी सारी जगह पे ना you will have to visualize a bit, and जितना अच्छे से you can visualize, उतना fast you will be able to solve these kind of questions. So this is a very basic question. There is a complicated version of this question as well, जहाँ पे a train meets with an accident and after traveling for let's say 100 kilometers, had the accident occurred 50 kilometers further, तो फिर क्या होता? तो उतना late होता train and so on and so forth. Again, that's a very interesting question. We might cover it in a separate video, but as far as this question goes, it's a fairly straightforward question जो हम लोग कर सकते हैं. ठीक है? अभी यहाँ पे let's see what this question says. A man leaves his home and walks at a speed of 12 kilometers per hour. तो उसका walking speed 12 kilometers per hour है in case 1. So first case में 12 kilometers per hour. Reaching the railway station 10 minutes after the train had departed. तो 10 minutes after मतलब late हो गया उसको. ठीक है? तो first case में this guy got late. Then, hi Raman, yeah. Alright, if instead he had walked at a speed of 15 kilometers per hour, अब इसकी जगह पे अगर वो 15 kilometers per hour की स्पीड पे वॉक करता, मतलब faster, case 2 में, then what would have happened? He would have reached the station 10 minutes before. मतलब यहाँ पे he would have reached early. तो he would have reached earlier and he would have been able to get the train. ठीक है? ये था. अभी उसको अगर एग्जैक्ट अगर उसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम हिज होम टू द रेलवे स्टेशन, तो क्या होना चाहिए? सो मुझे ये पता है कि दोनों ही केस में द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड इज द सेम. सो आई कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड द स्टेशन, लेट इट बी डी. उसको डी पकड़ के चलते हैं. डी का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, right? So according to the formula for the relationship between time, speed and distance will be equal to speed multiplied by time. ठीक है? तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल बी डिस्टेंस. अब यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि स्पीड कितना है इन द फर्स्ट केस, द स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन कितना है? अब टाइम टेकन, राइट, इन दिस पर्टिकुलर केस इज 10 मिनट्स आफ्टर द ट्रेन हैज डिपार्टेड. तो लेट्स से यहाँ पे टाइम टेकन इज टी. तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 12 किलोमीटर पर आवर है एंड टाइम टेकन इज टी मिनट्स, बट यू नीड नॉट कन्वर्ट मिनट्स टू आवर्स यहाँ. ठीक है? बिकॉज जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन होगा ना, उसको भी हम सेम तरीके से लिखेंगे. तो जब तक मैं ये यूनिट्स कांस्टेंट रख रहा हूं, आई नीड नॉट वरी अबाउट थिंग्स गेटिंग कैंसल्ड आउट और नॉट गेटिंग कैंसल्ड आउट. सेकेंड केस में मेरा डिस्टेंस सेम है, डी ही है, बट नाउ द स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वुड हैव बीन टेकन बाय दिस इंडिविजुअल टू ट्रैवल इन द सेकेंड इंस्टेंस. ठीक है? पहले इंस्टेंस में अगर वो टी मिनट्स ले रहा है टू ट्रैवल, then second instance में what is the amount of time that this person would have taken to reach this particular station. तो वो अगर अपने को आ जाता है तो then it makes your life much easier. Yeah. So let me know, what do you think? If the time taken in the first instance was t, then in the second instance what would have been the amount of time taken? एंड दोनों जगह पे मिनट्स में ही लिखना है. सो इट्स नॉट एज इफ पहले में मिनट्स में लिखा है एंड सेकंड में वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ आवर्स और समथिंग. ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ वी आर राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स इन द फर्स्ट केस, सेकंड केस में भी हम लोग मिनट्स के हिसाब से ही लिखेंगे. ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक? या ओके. t minus 10. I got one answer. Anyone else? सो अगेन थिंक ऑफ सिचुएशंस, थिंक ऑफ नॉर्मल सिचुएशंस जहां पे मतलब हम एक जगह पे 10 मिनट लेट पहुंचे, एक जगह पे 10 मिनट जल्दी पहुंचे. देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टाइम? ठीक है? लेट्स लुक एट दिस. चलो, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर सपोज टू रीच एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट 5 o'clock. या गौरव, करेक्ट. ठीक है? यू आर सपोज टू रीच एट 5 o'clock. ये मेरा टाइम है जहां पे मैं एक्सपेक्टेड हूं पहुंचने के. फर्स्ट केस में आई एम रीचिंग 10 मिनट्स लेटर. मतलब केस वन में मैं कितने बजे पहुंच रहा हूं? केस वन में
5:10 को मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है। केस 2 में क्या हो रहा है, आई एम रीचिंग 10 minutes बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स और बिफोर दिस इवेंट स्टार्ट्स। तो सेकंड केस में आई एम रीचिंग एट 4:50 ना, 10 मिनट पहले पहुंच रहा हूँ। सो कंपेयर टू द फर्स्ट केस, सेकंड केस में मैंने कितना टाइम बचा लिया, 20 बचा लिए मिनट्स। सो t-20, करेक्ट या रचित करेक्ट, साक्षी करेक्ट, यस। Alright, so 15 into t minus 20 will be the expression in the second case. अब दोनों जगह पे distance same है. So what we can do in this case is we can equate 12t equals 15 into t minus 20. 12 into t will be 15 into t minus 15 into 20, which is 300. ठीक है? तो 15t minus 12t will become 3t will be equal to 300. So t will be equal to 100. अब t is 100 minutes. ठीक है? ये मुझे मिल जाता है. अब यहाँ पे मुझे निकालना है डिस्टेंस, दैट इज द क्वेश्चन ना, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कितना है करके। अब डिस्टेंस मुझे पता है कि 12t है, सो आई कैन इजीली फिगर आउट द डिस्टेंस 12 इंटू टी। बट अभी क्या होगा, ये 12 जो है वो किलोमीटर्स पर आवर में है एंड टी 100 मिनट्स में है। तो किलोमीटर पर आवर इंटू मिनट्स करने से, इफ आई डू किलोमीटर्स पर आवर इंटू मिनट्स, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे ना, तो मुझे किलोमीटर में आंसर नहीं मिलेगा। सो आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू आवर सो दैट ये दोनों कैंसिल हो जाए। So 100 minutes will be 100 by 60 hours. ठीक है, so 1 hour is 60 minutes. So how many hours is 100 minutes? So 100 by 60 cross multiply करके you will get this. So you will get 12 5s are 60, 5 into 20 is 100. You will easily get D का value as 20 kilometers. So in this particular case, the distance between the home and the station will be 20 kilometers. ठीक है, सो दैट इज वन वे ऑफ सॉल्विंग इट। अभी आई विल शो यू अ क्विकर वे ऑफ डूइंग दिस एज वेल, बट ये एक बेसिक तरीका है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व इट यूजिंग द फॉर्मूला इटसेल्फ, उसमें और ज्यादा फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट विथ अ बिट ऑफ विजुअलाइजेशन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इवन क्विकर। ठीक है, so if this part is clear, we will go to the other formula. We will try to see how exactly can we do it using a bit of visualization, क्योंकि that is the interesting way of doing this. All right. ठीक है, चलो, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स लुक एट द अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस। तो विजुअलाइज करके सॉल्व करेंगे, इट विल बी मच क्विकर। ठीक है, सब यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड रेशियोज। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इज द स्पीड चेंजिंग फ्रॉम केस वन टू केस टू। तो केस वन में द स्पीड वॉज 12 किलोमीटर पर आवर, 12 है। केस टू में द स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, तो 15 है। राइट, नाउ व्हाट कैन आई से, आई कैन से दैट बिकॉज द डिस्टेंस इज सेम, स्पीड इनटू टाइम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम को अगर कांस्टेंट रखना है ना, व्हाटएवर वी आर मल्टीप्लाइंग स्पीड बाय, टाइम को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या करेक्ट रचित, s1t1 इज इक्वल टू s1t2, s2t2 रादर। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं क्या बोल रहा हूं, न्यू स्पीड जो है, ठीक है, न्यू स्पीड इज 15 बाय 12 इंटू ओल्ड स्पीड या ओरिजिनल स्पीड। बट 15 बाय 12 इज नथिंग बट 5 बाय 4, 3 कैंसिल कर दिया मैंने। सो न्यू स्पीड इज 5 बाय 4 इंटू ओरिजिनल स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यू स्पीड जो है ना वो 5 बाय 4 इंटू स्पीड हो गया। तो मुझे टाइम को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है सो दैट दिस रिमेन्स कांस्टेंट। टाइम हैज टू मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 5 ना, करेक्ट। सो 5 बाय 4 को अगर मैंने स्पीड से मल्टीप्लाई किया है, तो टाइम को अगर मैं 4 बाय 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड तो ही यू विल गेट स्पीड इनटू टाइम अगेन। सो आई कैन से दैट न्यू टाइम is 4 by 5 into original time. Original time is case 1 का टाइम था। ठीक है, सो न्यू टाइम इज 4 by 5 into ओरिजिनल टाइम। अभी कोई भी चीज अगर पुरानी चीज की 4/5 हो गई, सो कैन आई से दैट न्यू टाइम is when the original time reduces by 1/5। तो कोई भी चीज का अगर मैं 1/5 निकाल दूं, आई रिमूव 1/5 ऑफ इट, देन आई हैव 4/5 लेफ्ट। ठीक है, नाउ ओरिजिनल टाइम इज रिड्यूस्ड बाय 1/5, बट ओरिजिनल टाइम कितने से रिड्यूस हुआ है, 20 मिनट से रिड्यूस हुआ है। सो कैन आई से दैट, आई राइट इट हियर, 1 by 5 into original time is 20 minutes. So can I say that original time is 100 minutes? So अगर 12 किलोमीटर इन 1 आवर कर रहा है तो 100 मिनट्स में कितना कवर करेगा, 60 मिनट्स में 12, तो 100 मिनट्स में कितना, 20। एंड दैट इज बेसिकली व्हाट विल गिव यू योर आंसर।
So when it comes to visualizing this, the easier way of doing it, मतलब if I were to simulate कि mentally अगर मैं करूँ तो कैसे दिखेगा? I know 12 and 15. I know distance is constant. I will say that new speed is 5 by 4 times original speed. New time is 4 by 5 times original time. New time is 1/5 or old time has reduced by 1/5 to give new time. But the old time has reduced by 20 minutes. So 1/5 of old time is 20 minutes. Old time is 100 minutes. 12 kilometers, 60 minutes. मतलब 5 minutes में 1 kilometer. तो 100 minutes में 20 kilometers. Right? So visually also you can do it. अभी मैंने इतना लिखा है because some of you might not be knowing this particular concept. But for the rest of you, this is basically how you can do it. You can just visualize things and you can do this particular question. तो वैसे करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है? So I hope ये वाला मेथड सबको समझ में आ गया. So there are some questions for which you can use these kind of methods to solve it as well. Of course, if you are not able to visualize it right now, maybe use the older method to do this. And after a month or so, जब थोड़ा सा और आपका hold अच्छा हो जाएगा on quant, you can come back to this video and look at this method. ठीक है? All right. So that was question number 4 that we just did. Let's move on to the next one. Question 5 पे जाते हैं. All right. So question 5 was easy. Many of you got it right. So most of you I think got this one right. बहुत ही straightforward सा question था. Now what we are saying here is Ravi invests 50% of his monthly savings in fixed deposits. FD में invest करता है. 30% of the rest. Now the rest is very important. Huh? A lot of people say 30% करके उसको 30% लिख देंगे and then they will calculate it. But it's not like that. It's 30% of the rest. And the rest मतलब जो भी बचा 30% of the rest के बाद वाला rest that goes into उसका savings bank account. If the total amount deposited by him in the bank for savings account and fixed deposit is 59500, then Ravi का monthly savings कितना होगा? So Ravi का monthly savings जो है, let's say is 100x. क्यों 100x लिया मैंने? Because percentage terms में ना तो it's better to take 100x. अब 50% जो है ना वो fixed deposit में चला गया. तो यहाँ पे write it as FD. तो 50x FD में चला गया. 30% of the rest. Now the remaining is 50x. उसका 30%. So what is 30% of 50x? 15x हो जाएगा. Now this 15x goes into stocks and the remaining मतलब 50 में से 15 निकाल दिया, then 35x जो बचा that goes into savings account. ठीक है? Now we know that the total amount deposited by him in the bank for savings account and fixed deposit is 59500. So 50x plus 35x, that is 85x, is 59500. We have to find what is the monthly savings. ठीक है? तो 100x कितना है? That is the question. So यहाँ पे बहुत easily we can do this. जो 85 है ना उसको we know that you have to take a leap of faith here and you have to say that ये 59500 85 को पक्का डिवाइड करेगा. During the test you can use a calculator and manage it, but अभी ठीक है calculator नहीं है तो I'll cut a 5 from here and here. So 5 17s are 85 and यहाँ से अगर 5 cancel करेंगे 5 1s are 5 5 1s are 5 45 बचेगा 5 9s are 45 and then 0 0. Now if you know the table of 17 you will get 17 7s are 119 तो 700 बचेगा. So I'll get x equals 700. So 100x will simply be 70000. ठीक है? तो ऐसे करके you can easily solve this particular question. बहुत ही straightforward सा question है. And the answer here should have been 70,000. Fine. So I hope all of you got it right and everybody managed this easily. It was a fairly straightforward question. तो ये बहुत easily manageable है. All right. Yeah. So we are halfway through the session now. For those of you who have recently joined us, this is a part of the daily drill. So जो लोग नए हैं जिन्होंने नहीं दिया हुआ है ये test, so this is basically the daily drill that we have. This is a series of daily tests that we will be doing 5 days a week, Monday to Friday, throughout the entire preparatory journey. So CAT तक या November तक rather we will be doing these sessions. These sessions have two parts. One is the test and the second thing is this live session that you are attending. टेस्ट जो है वो आपको एक अलग प्लेटफॉर्म पे देनी है तो वो आपके पास एक लिंक होगा इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन यूज टू टेक द टेस्ट. Once you enroll for that particular thing you will have to confirm your enrollment, only then will you be able to access the tests. So वो करके टेस्ट देना है and once you are done with the test we will discuss the answers every evening here in a live session.
So that way you will be able to either revise the test or understand something that you would not have understood earlier. Okay, so that is basically about the daily drill that is there. I hope all of you are tuned into this and all of you are making use of this in a particular manner, right? And I just got information. The next test is live. So data interpretation is the next session that we are going to have tomorrow. Again, I have two sets from DI that I have put as a part of the test. So do take the test before tomorrow evening 8 p.m. and we'll be discussing those questions there. Okay. Coming back to the session, let's go to question 6 now. Now, if a seller gives a discount of 15% on retail price, she still makes a profit of 22%. Okay. Which of the following ensures that she makes a profit of 20%? तो यहाँ पे 15% डिस्काउंट अगर वो सेलर देती है देन शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%. फिर 20% डिस्काउंट के लिए क्या करना चाहिए? Now in this particular case, what you will have to do is you will basically have to sit and figure out the expression and then you will be able to manage it. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? 15% ऑन रिटेल प्राइस का अगर डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट होता है 2%, राइट? सो रिटेल प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट होगा दैट विल बेसिकली बी द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी कॉस्ट प्राइस, जो भी कॉस्ट था उसके ऊपर करते हैं, राइट? सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना ये देखते हैं दैट रिटेल प्राइस में 15% का डिस्काउंट दिया, ठीक है? सो सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट 15% का डिस्काउंट विच मीन्स 85% ऑफ द रिटेल प्राइस, ठीक है? 15% डिस्काउंट है बट प्रॉफिट इज 2%. सो प्रॉफिट इन दिस केस इज 2%, ठीक है? सो प्रॉफिट इज 2/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, बट प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो ऐसे कुछ होगा, राइट? सो प्रॉफिट इज 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी दिस. सो यहाँ पे अगेन दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, बट अगेन फॉर दोस ऑफ यू हु आर न्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस, न्यू टू परसेंटेजेस, दिस इज द वे इन विच यू कैन थिंक अबाउट थिंग्स. तो कॉस्ट प्राइस इधर चला जाएगा, यू विल गेट 102/100 इंटू सीपी, ये मिल जाएगा. सो आई कैन से दैट 102/100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज 85/100 इंटू रिटेल प्राइस, ऐसे कुछ आएगा. नाउ आई नो दैट दीज 200s विल गेट कैंसल्ड आउट. 17 5s are 85, 17 6s are 6, ये मुझे मिल जाएगा. नाउ आई कैन से दैट कॉस्ट प्राइस अपॉन रिटेल प्राइस, और वी कैन से रिटेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 6/5. सो व्हाट कैन वी से? रिटेल प्राइस जो है इट इज 20%, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, या 20% ग्रेटर दैन द सीपी. तो अगर उसे 20% का प्रॉफिट करना पड़ेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रिटेल प्राइस पे ही बेचना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, अगेन इफ यू डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स अ लॉट, इतना सब इक्वेशन लिख के एसपी माइनस सीपी सब करने का जरूरत नहीं है. ऑनेस्टली व्हेन आई डिड दिस आई डिडंट इवन थिंक ऑफ दीस एक्सप्रेशंस. आई एम जस्ट राइटिंग इट बिकॉज अ लॉट ऑफ यू विल बी डीलिंग विद फॉर्मूलाज एंड सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब करेंगे. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस फॉर्मूलाज, बट अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली विजुअलाइज एंड से व्हाट हैपेंस. यू कैन से दैट रिटेल प्राइस पे 15% दे दिया. लेट्स से रिटेल प्राइस जो था ना वो 100 रुपीज था, लेट्स से फॉर एग्जांपल. अभी उसने इस पे 15% डिस्काउंट दिया तो 85% में उसने चीज बेची. नाउ आई कैन से दैट 85 इज नथिंग बट 1.02 इंटू कॉस्ट प्राइस. ठीक है, आई नीड टू एंश्योर दैट द प्रॉफिट इज 1.2 इज 20%, right? So I have to ensure that whatever profit is being made, that is basically 1.2 times the cost price. That is what I need to figure out. तो कैसे करेंगे? So it's exactly the same thing that we have done here, just that we will have to be slightly more conscious about the values and the factors, right? 85 का factor 17 है, 102 का factor is 17 है, and that so on and so forth. Yeah. So as Rachita has mentioned, you can assume values as everything is in percentage. ठीक है? So 15% of the retail price दिया हुआ है, profit becomes 2%, तो ये दिया हुआ है तो वैसे भी कर सकते हैं. अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इज, अगर ये वाला एक्सप्रेशन में नहीं घुसना है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो सीधा प्रॉफिट पे ही खेल लो ना. प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, सो आई कैन आल्सो से दैट लेट कॉस्ट प्राइस बी 100, सो माय सेलिंग प्राइस बिकम्स 102, बट द सेलिंग प्राइस इज 85% ऑफ रिटेल प्राइस. सो 85% ऑफ रिटेल प्राइस इज 102, तो रिटेल प्राइस कितना बना? तो 17 5s are 85, 17 6s are 102, you will get retail price as 120. तो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 होना चाहिए, रिटेल प्राइस 120 है, विच मीन्स दैट इट इज ऑलरेडी एट द ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस. ठीक है, रचित, आई एम होपिंग दिस इज व्हाट यू डिड. या,
So that is another way of doing it. So again, you need to have some instinct for numbers. अगर नंबर से करना है तो अगेन इफ यू आर नॉट रियली अ वेरी गुड मैथ कैंडिडेट यू कैन डू इट यूजिंग द फॉर्मूला शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम बट फॉर्मूला पक्का से पता कर लेना फॉर्मूला के अंदर डोंट मेस थिंग्स अप ठीक है सो दैट इज वन वर्ड ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड बट अदरवाइज इट्स अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैनेजेबल क्वेश्चन है ये इजीली हो जाता 2 मिनट के अंदर ठीक है so cost price let it be 100 selling price 102 but 85% of the retail price is 102 retail price becomes 120 which is exactly what the selling price should have fine let's go to question 7 yeah this was the one which a lot of people found to be difficult you assume mark price to be 100 हाँ but रचित mark price 100 करने से ना वो 80 हो जाता है and then the 85 हो जाता है and then that 85 becomes slightly tricky to handle so that is why cost price को 100 करेंगे तो it might become easier क्योंकि 2% on 100 and 20% on 100 are much easier to equate or whatever to manage ठीक है but fair enough मतलब mark price को भी 100 लेके कर सकते हैं not an issue all right now let's look at this one this is an easy question if you know your time and time speed distance में upstream downstream का concept अगर पता है it's a fairly straightforward question but I am assuming that a lot of people saw that ये सब इसमें numbers बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ एक नंबर दिया है 75% all your options are in the form of root 6 by root 2 root 7 by 2 2 root 5 ये सब देख के a lot of people will give up on this particular question which I think happened because a lot of people have not attempted or have attempted this incorrectly so let's see what we could have done. Another reason why this could have happened is because you might not have reached the last 4 questions. In fact, the toughest questions or the ones that people left easily were questions 7, 9 and 10. And I'm assuming that happened because you spent a lot of time on the first 6 questions. And because of that, last you had to hurry or you could not give a lot of time to these questions. So that is again something that you have to keep in mind when you're solving these kind of tests. ठीक है अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं a man travels by a motorboat down a river to his office and back with the speed of the river unchanged, he doubles the speed of his motorboat. Then his total travel time gets reduced by 75%. That's it. तो मुझे क्या करना है ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटरबोट टू द स्पीड ऑफ द रिवर निकालना है अब लेट्स से फॉर एग्जांपल द मोटरबोट का स्पीड राइट लेट्स से द स्पीड ऑफ द मोटरबोट इज बी जैसे हम नॉर्मली करते हैं एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और द रिवर इज एस ठीक है तो बी एंड एस वाला फॉर्मूला आई एम अज्यूमिंग एवरीबॉडी नोस सो फर्स्ट केस के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस इज डी ठीक है तो एक बार अगर वो डी जा रहा है तो डाउन अ रिवर जा रहा है पहले वो तो डाउन अ रिवर जा रहा है मतलब स्ट्रीम विल एड द मोटर बोट तो बी प्लस एस होगा उसका रिलेटिव स्पीड बिकॉज बोट का स्पीड एंड स्ट्रीम का स्पीड बोथ ऑफ देम विल गेट एडेड अब इसके अंदर वो वापस भी आ गया उसमें उससे तो ही हैज ट्रेवल्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम एज वेल अगेंस्ट द करंट एज वेल तो यहाँ पे द इफेक्टिव स्पीड बिकम्स बी माइनस एस डी अपॉन बी प्लस एस प्लस डी अपॉन बी माइनस एस इज द फर्स्ट टोटल टाइम टेकन सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं टोटल टाइम गेट्स रिड्यूस्ड बाय 75% मतलब जो टोटल टाइम है सेकेंड केस के अंदर दैट इज 25% ऑफ द ओरिजिनल टाइम मतलब 1/4 ऑफ द ओरिजिनल टाइम इज द न्यू टाइम ठीक है न्यू टाइम क्या है वो सिर्फ मोटरबोट का स्पीड डबल कर रहा है बाकी एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट सो डी अपॉन टू बी प्लस डी अपॉन टू बी माइनस एस सो दिस विल बेसिकली बी द सेकेंड एक्सप्रेशन अभी हमको सिर्फ उसको इक्वेट करना है तो ये तो डी तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज एवरी एक्सप्रेशन हैज डी इन द न्यूमरेटर आई विल गेट 1/4 इंटू अगर ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इफ यू गेट बोथ द न्यूमरेटर्स यू विल गेट बी माइनस एस प्लस बी प्लस एस अपॉन बी प्लस एस इंटू बी माइनस एस इज बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ये मिल जाएगा दिस विल बी नथिंग बट टू बी प्लस सॉरी टू बी माइनस एस प्लस टू बी प्लस एस अपॉन टू बी प्लस एस इंटू टू बी माइनस एस ये बन जाएगा 4b स्क्वायर माइनस एस fine so you'll get 1/4 into minus s plus s will get cancelled you will get 2b and you will have b square minus s square here and यहाँ पे again minus s plus s will get cancelled out you will get 4b upon 4b square minus s यहाँ पे 2b into 2 will be 4b so you are going to get अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे you are going to get 4b square minus s square लेफ्ट हैंड साइड में वैसे के वैसे जाएगा यहाँ पे it will be 4b square minus 4s square multiplied by 2 जो यहाँ पे 2 बचा so you are going to get 4b square minus s square is 8b square minus 8s square अगर हम टर्म्स को रीअलाइन करेंगे you will get 4b square equals 7s और you will get b square by s square equals 7/4 ठीक है और you will get b by s equals root 7/2
So the correct answer here is option B, root 7 by 2. So there is some calculation involved in this particular context, but once you go get into the flow, you will be able to manage this question easily. तो उतना difficult भी नहीं है question. You could have managed this particular question if you would have just stuck to the formula. अब इस पे और कोई shortcut you will not be able to get. Why? Because you have b plus s and 2b plus s. तो अगर numerator the denominator basically just changes by some amount, then it will become very difficult for you to manage these calculations. So ये वाले context के अंदर the best way to do this would have been looking at this particular expression and keep on doing it till the time you end up getting an answer, right? So that was basically what was required from your end to solve this particular question. Can we solve this by using ratios as the distance is constant? Rachit, no, it will be difficult, right? Because in both the cases, the denominator is the only thing that has changed. So the first case that we saw, na distance was constant. Usme what happened? Distance was constant, so time into speed, the ratio was the issue there, right? But wahan pe once you look at the ratio there, in that case, speed became 5/4 of the original speed. That was basically the thing. But yahan pe speed is not becoming twice the original speed. In this context, the speed ka one part is increasing. So it is not increasing by a particular ratio. Okay? Because it is increasing by some random increment, वो हमको पता नहीं कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या है एंड दैट इज व्हाई वी विल नॉट बी एबल टू यूज ratios or the time into speed being constant. So that is an issue in this particular case. That's why this is the recommended way of solving this. ठीक है, fine. So 3 more questions to go. We will solve the 8th question. Yeah, ठीक है, perfect. All right, so now question number 8. This a lot of people got right. C1, C2, C3, C4, C5 are 5 companies. Profits made by C1, C2 and C3. Yes, yes, Archie. Two different speeds are involved, तो नहीं कर सकते. Yeah. The profits made by C1, C2 and C3 are in the ratio 9 is to 10 is to 8. Profits made by C2, C4, C5 are in the ratio 18 is to 19 is to 20. ठीक है. So we'll just write it normally. C1, C2, C3, C4, C5. For first case में C1, C2, C3 के profits are 9 is to 10 is to 8. ठीक है. And second case में C2, C4, C5 are 18. C2 is 18, C4 is 19 and C5 is 20. राइट. अब ये दोनों केसेस के अंदर द कॉमन थिंग इज C2 ना. सो C2 को अगर एक लेवल पे लेके आ जाएंगे देन विल बी एबल टू मैनेज दिस इजीली. वी ऑल्सो नो दैट C5 मेड अ प्रॉफिट ऑफ 19 crores मोर देन C1. तो इसको और इसको अपने को इक्वेट करना है. देन द टोटल प्रॉफिट मेड बाय ऑल 5 companies वाज व्हाट. अभी इन दोनों को मेरे को एक लाइन पे लेके आना है. तो कैसे लेके आएंगे एक लाइन पे? I will have to get a number which is a multiple of 10 and a multiple of 18. Now, what is the LCM of 10 and 18? The least common multiple when it comes to 10 and 18 is going to be 90. ठीक है? Because 18 के पास ऐसा क्या नहीं है जो 10 के पास है? 18 already has a 2, but 18 does not have a 5. And if you give that 5 to 18, give मतलब multiply 18 with 5, you are going to get 90. तो मैं इसको ना 90 पे लेके आता हूँ. अभी अगर मैं ये 10 को 90 पे लेके आ गया, it basically means that I'll have to multiply all three of them by the same number to get to keep the ratio constant. So if 10 nines are 90, 9 nines are 81 and 8 nines are 72 is what we get. And ये वाले context में अगर मेरे को इस चीज को 90 बनाना है, I'll have to multiply this by 5. So 18 fives are 90, 19 fives are 95 and 20 fives are 100. So now my ratio becomes 81 is to 90 is to 72 is to 95 is to 100. तो ये मेरा एक रेशियो बन जाता है जहां पे आई कैन कंपेयर ऑल 5 ऑफ. नाउ वी नो दैट C5 मेड अ प्रॉफिट ऑफ 19 crores मोर देन C1. तो C5 का प्रॉफिट इज 100, C1 का प्रॉफिट इज 81. तो आई एम सेइंग 81x and 100x. Now, luckily, the difference is also 90 and the difference is also 19 crores. So we can say that अगर ये दोनों का बीच का difference 19x है and the difference is 19 crores, I can say that x is equal to basically 1. ये मैं बोल सकता हूँ. If x is equal to 1 crore, तो इस सबका प्रॉफिट अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? I just have to do 81 plus 90 plus 72 plus 95 plus 100. Now you can do it in a lot of ways, but जो भी normal addition से भी कर सकते हैं. So now if you do 10 plus 9, 190, 190 plus 70 is 260, 260 plus 90 is 350 plus 8 is 430. So 430 something, 431 plus 2, 433 plus 5, 438
The correct answer here is option A, that is 438. So again, fairly straightforward, easily manageable question. ये this was probably one of the easier questions of the test. तो जिनके पास टाइम भी कम बचा होगा उन लोगों ने भी इसको ठीक से सॉल्व किया हुआ है. ठीक है. So kudos to everyone who got this right. Fine. Let's move on to the ninth question. Two more questions to go. तो क्वेश्चन 9 देख लेते हैं. Question 9, surprisingly, a lot of people got. Well, I was very surprised at this, but somewhere I think things got messed up a bit. Okay. So let's say, for example, let's see what exactly we can do here. Now, the number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys. If 30% of the girls and 40% of the boys get admission, then the percentage of candidates who do not get admission is. Okay. So in this case, let's say, for example, जो number of girls है ना वो 200 है. सो यहाँ पे यू कैन अज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स 200 है. और क्यों अज्यूम कर सकते हैं? बिकॉज परसेंटेज पूछा हुआ है, ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, ये ट्वाइस है. सो देर इज नो वेयर जहां पे मुझे नंबर चाहिए, हाउ मेनी पीपल पास, ये नहीं पूछा हुआ है, परसेंटेज पूछा हुआ है. दैट इज माई फर्स्ट क्लू दैट आई कैन बेसिकली टेक अ नंबर एंड देन ट्राई टू फिगर आउट व्हाट हाउ एग्जैक्टली इज इट रिएक्टिंग. सो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 200. इट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 100 इन दिस पर्टिकुलर केस. अभी 30% ऑफ द गर्ल्स गेट एडमिशन. So 30% of 200 मतलब 60 girls get admission and 45% of the boys get admission. मतलब 45 of 100 is 45% of 100 is 45 get admission. तो कितने लोगों को एडमिशन मिला? 60 plus 45 तो 105 लोगों को एडमिशन मिला. So out of 300 out of 200 plus 100 that is 300, 105 people got admitted. ठीक है. 105 out of 300 got admission. तो ये मुझे पता है यहाँ पे. So how many people did not get admission? इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वही होगा. यू कैन ईदर टेक योर परसेंटेज डायरेक्टली यहाँ पे एंड 100 में से माइनस कर दोगे तो भी विल गेट इट. तो अगर नहीं पता कि क्या चल रहा है यहाँ पे, लेट्स से 5 से डिवाइड किया तो 21 5 105 आएगा एंड 5 60s आर 300 आएगा. अगेन यू विल बी एबल टू कैंसल आउट 3, तो 7 by 20 आ जाएगा. तो 7 by 20 इज व्हाट? 35%. या फिर यहां से सिर्फ 3 कैंसिल करते तो भी would have got 35 by 100. So 35% of the candidates got admission. So what is the percentage that did not get admission? 35 का complement, which is 65%. So that is basically our answer. ठीक है. So 65% will basically be the answer to this particular question. Alright. Did someone else do something else here and try to do it? Does this remind you of something? Spoiler. तो ये मेथड अगर किसी ने यूज किया है तो देन आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. And if you haven't used it and now you know, then start thinking along these lines. Because again, a very interesting way of solving this question. So there are two things involved, two categories involved, और दोनों के अपने अपने weights हैं that are there, right? So girls are 200, that is basically the weight, and boys are 100, so that is basically the weight. Girls are contributing something, boys are contributing something, and together they are contributing something. So what does that remind you of? That should remind you of something called as weighted averages or the allegation rule. ठीक है. सो एलिगेशन रूल अगर यहाँ पे समझ में आ गया, योर लाइफ विल बिकम स्लाइटली इजियर और यू विल एटलीस्ट फील हैप्पी अबाउट योरसेल्फ. क्योंकि इक्वेशन से बहुत इजीली बना सकते हैं. इक्वेशन के लिए यू नीड नॉट इवन राइट इट डाउन इफ यू आर लाइक एक्सट्रीमली गुड, बट एलिगेशन इज समथिंग दैट विल मे बी गिव यू दैट जॉय, राइट, इफ नथिंग एल्स. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट 30% ऑफ द गर्ल्स पास्ट, 45% ऑफ द बॉयज पास्ट. I also know that the ratio, the weight of the girls is 2 and the weight of the boys is 1. ठीक है. तो अब यहाँ पे बीच में एक नंबर आएगा. ये जो नंबर है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली समथिंग जिसका गैप फ्रॉम 45 इज 2 पार्ट्स एंड जिसका गैप फ्रॉम 30 इज 1 पार्ट. तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे जो है ना, ये 3 पार्ट्स होने चाहिए इन दोनों के बीच में. दिस इज रिवर्स एलिगेशन यू कैन से. ठीक है. तो एलिगेशन में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई बीच का एक वैल्यू है, वो 45 से थोड़ा कम है बट 30 से थोड़ा ज्यादा है. सो बेसिकली अगर मैं 45 से उसका डिस्टेंस निकालू तो मेरे को 2 पार्ट्स मिलेंगे, और 30 से डिस्टेंस निकालू तो एक पार्ट मिलेगा, बट वो 30 और 45 के बीच में आता है. इसका मतलब क्या हो गया, टुगेदर द गैप बिटवीन 30 एंड 45 दैट इज 15 विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स.
अब 15 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट इज 5 ना, तो ये जो गैप होगा वो 5 का होगा, दैट्स व्हाई दिस विल बी 35, एंड ये वाला गैप जो होगा वो 10 का गैप। सो 45 gap of 10 35, 30 gap of 5 35, you will get 2:1 as the allegation. So 35% is the number of people who got admission, 65% would have failed, that's it. So if you are able to do this, it's much faster, and again as I said, it will maybe give you that confidence boost if nothing else. तो ये वाले कॉन्टेक्स्ट में एक बार सोचना चालू कर देना, आई थिंक यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस एज वेल। फाइन, understood this part? Allegation, everybody understood? If everybody has understood this, then we will move on to the next one. So I'll wait for some time here. Allegation is again a very interesting concept. इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट इन अदर केसेस एज वेल। अब यहाँ पे भी कर सकते हैं, वेट्स के केसेस में भी कर सकते हैं, मिक्सचर्स के केस में डेफिनेटली कर सकते हैं। सो एवरीवेयर वेयर टू थिंग्स आर मिक्सिंग देयर इज नो थर्ड थिंग इन्वॉल्व, एंड the final outcome is basically a mixture of these two components. That is where you can use weighted averages very easy. ठीक है, I hope all of you have got this. ठीक है, fine. चलो, all right, we'll go to the last one. I hope all of you have figured this out. Cool. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये भी easy है, this is again a manageable question, but again a lot of people did not get it right, maybe because there was very less time left and the question seemed a bit longer than the rest of the questions. ठीक है, तो a stall sells popcorn and chips in packets of 3 sizes, large, super and jumbo. तो 3 sizes हैं, large, super, jumbo. The numbers of large, super and jumbo packets in its stock are in the ratio 7:17:16 for popcorn. तो popcorn यहाँ पे लिख लेते हैं, and we will write large, super and jumbo. तो यहाँ पे 7:17:16 है, and for chips it is 6:15:14. ठीक है, the total number of popcorn packets in its stock, total number of popcorn packets across these three is the same as that of the chips packets. तो हमको पता करना है कि जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स और जंबो चिप्स पैकेट्स 16:14, ठीक है, ये रेशियो क्या होगा, या 16 and 14 क्या रेशियो होगा। अभी यहाँ पे व्हाट डू वी नो इन दिस केस, लेट्स से दैट द नंबर ऑफ लार्ज पॉपकॉर्न पैक्स आर 7x सॉरी, सुपर इज 17x एंड जंबो इज 16x। तो टोटल पॉपकॉर्न कितने बने मेरे पास, 7 + 17 इज 24, 24 + 16 इज 40x। तो पॉपकॉर्न के 40x टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स बनते हैं। चिप्स के कितने बनेंगे, लेट्स से 6y, 15y एंड 14y। तो 6 and 15 is 21, 21 and 14 is 35y, ये बन जाएगा। बट वी हैव बीन टोल्ड दैट पॉपकॉर्न और चिप्स का तो ओवरऑल तो नंबर सेम है, सो आई नो दैट 45x इक्वल्स, और सॉरी 40x इक्वल्स 35y, ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट, आई हैव टू एंश्योर दैट बोथ दिस नंबर्स आर सम इंटीजर, बिकॉज दैट विल मेक माय लाइफ इजियर। और आई कैन ऑल्सो से इन दिस केस दैट x/y जो मेरे पास है दैट विल बी 35/40 और 7/8, तो ये भी रख के चल सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं मेरे से, नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न पैकेट्स मतलब 16x एंड जंबो चिप्स पैकेट्स 14y, तो ये रेशियो कितना है ये पूछा हुआ है। वेरी इजी, 16/14 into x/y, बट x/y क्या है, 7/8 है, तो 7/8 is what you are going to get. So you'll get 7 2s are 14, 8 2s are 16 and 2 cancel हो जाएगा. So your answer is going to be 1:1. So the correct answer here is going to be option A, that is 1:1. ठीक है, so that was basically the session today. Those were the 10 questions that we had. Now जैसे जैसे we go ahead, the questions will become slightly more difficult and धीरे धीरे evolve करेंगे. Tomorrow's test is already live now, so data interpretation का test है, you can take it now or you can take it tomorrow morning anytime during the day, and in the evening we will discuss the DI sets that are there. So do try those out, and then we will be able to discuss those things in a much more insightful manner. ठीक है, आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस वर क्लियर। कहीं पे कुछ भी डाउट है, इन केस देयर समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन इन दी वंस द वीडियो गेट्स अपलोडेड। तो उसमें एक बार यू कैन जस्ट लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, इफ देयर इज समथिंग दैट that there is a better method that you can come up with, something that you might not have understood, कुछ भी अगर है तो you will be able to
understand this. Rachit, I think the highest score was 20, if I'm not wrong, 18 or 20, one of those two numbers. Again, I haven't seen it. Maybe I can check it once. Give me a second. I'll just try to check if I'm able to. Yeah, but again, a fairly good performance considering that this was the first quant test and people might not have known what to expect. उस हिसाब से वो context में I think it was a good performance by many of you. So I'll just check once what the highest score is or what the scores were in general, and you should be able to get some insights. All right, so I can see a score of 20. In fact, you have got 20. I can see 17s, 18s. I can see a 24. I can see a 30 as well. Yeah, so 30 and 24 and 21 and 20. I can see these scores that are above yours, Rachit. Okay. But on an average, people have taken more than 15 minutes, more or less 15, 19 minutes बहुत लोगों ने लिया हुआ है. So people have done it till the very end, which is a good thing. I'm happy about it. Yeah. All right. So on that note, I believe there are no doubts as such. So we'll close the session now. And if there's anything, of course, let us know in the comment section. If there is something in particular that you would like to hear from us, uh, please let us know. And if you like the content that we are delivering, make sure that you subscribe to the channel. You share it with the people whom you know will benefit from this. Like the videos that we post, and of course, if there are any comments, suggestions, जो भी है, do let us know. We will try to incorporate those in our upcoming sessions. ठीक है? So have a great evening, everyone, and I'll see you again tomorrow for the next session.